So hey everyone, welcome back to my channel Legalites Hub. I'm Kanak Shukla and this is the 8th lecture in the series of Law of Torts. And today we are going to cover the topic false imprisonment. So this is basically the table of contents and these are the topics which I'm going to cover in my today's video. That is what is false imprisonment, essential elements of false imprisonment, important case law related to this, defenses for false imprisonment, remedies for false imprisonment. So let's begin with our first topic, that is what is false imprisonment. What is false imprisonment? False imprisonment refers to the intentional act of restricting someone's physical freedom without lawful justification. It involves intentionally confining or restraining an individual against their will without their consent and without legal authority. So basically, in simple words, false imprisonment refers to intentionally restricting someone's physical freedom but without any legal justification. And this act involves intentional confining or restraining. Restraining means totally restricting someone, an individual, against their will without their consent and without legal authority. In simple words, false imprisonment means a total restraint on the physical movement of the person. It is mandatory for the person putting restraint to have a legal justification for the same. For anyone who is restricting any individual's physical freedom must have any legal justification for the same. For example, shopkeeper detains a customer without evidence of the theft. Imagine a scenario where a shopkeeper accuses a customer of theft without any concrete evidence. In response, the shopkeeper locks the exit door, preventing the customer from leaving the store until the authorities arrive. If the shopkeeper accusations are baseless, this act may constitute false imprisonment. So यहाँ पे कोई एक shopkeeper था जिसने customer को restrict कर दिया था because he accused him of theft without any concrete evidence. और शॉपकीपर ने उसको लॉक कर दिया था जिससे वो एग्जिट नहीं कर सके और कस्टमर को प्रिवेंट करा था कि वो स्टोर को लीव नहीं करे अनटिल कोई अथॉरिटीज वहां पे नहीं आ जाए. तो अगर ये जो शॉपकीपर के एक्यूजेशंस है वो बेसलेस होंगे तो यहाँ पे शॉपकीपर विल बी हेल्ड लायबल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. I hope the concept of false imprisonment is clear to all my legalites out there. So let's move forward to our next topic, that is essential elements of false imprisonment. So basically there are three essential elements of false imprisonment: intentional confinement, lack of consent, and awareness of confinement. This is a brief description about the essential elements of false imprisonment. First essential element is intentional confinement. Imprisonment requires a deliberate act aimed at depriving an individual of their freedom of movement. The defendant must have intended to confine the victim against their will. So basically, false imprisonment क्या रिक्वायर करता है? एक डेलिबरेट एक्ट जिसने किसी पर्सन को डिप्राइव कर दिया हो फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, और जो डिफेंडेंट हो वो उसने इंटेंशनली उस पर्सन को कन्फाइन करके रखा है उसकी मर्जी के बिना. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटेंशनल कन्फाइनमेंट होना चाहिए. वो इंटेंशनली वो एक्ट कर रहा होना चाहिए जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो किसी अदर पर्सन की फिजिकल फ्रीडम को. सेकेंड essential element is lack of consent. The victim must demonstrate that they did not provide voluntary consent to the confinement or restraint. एसेंशियल एलिमेंट ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कन्फाइन करके रखा है या उसके मूवमेंट को ब्लॉक करके रखा है तो उसमें प्लेंटिफ की कंसेंट नहीं होनी चाहिए. वो वहां पे विदाउट द कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ उसने उसको रिस्ट्रेन करके अगर रखा है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा. Third essential element is awareness of confinement. The victim must be aware of the confinement or restraint at the time it occurs. If the victim is unaware of their confinement, there may not be viable claim for false imprisonment. जो विक्टिम होना चाहिए वो अवेयर होना चाहिए अपनी कन्फाइनमेंट को लेके, अपने रिस्ट्रेंट को लेकर के एट द टाइम जब उसको डेलिबरेटली कन्फाइन करके रखा गया हो या रिस्ट्रेन करके रखा गया हो. अगर विक्टिम अनअवेयर है कन्फाइनमेंट को लेकर के तो यहाँ पे उसका कोई भी क्लेम नहीं बनता है फॉर द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. So let's move forward to our next topic, that is important case law related to false imprisonment. Case law is Bird versus Jones 1845.
Case facts are: bird B wished to cross a section of a public road which was closed off due to boat race. To policeman, D prevented B from passing in the direction he wished to go, but was allowed to go in the only other direction in which he could pass. B refused to go in that direction and stood in the same place. B raised an action against D for the false imprisonment. यहाँ पे क्या हुआ था, एक पर्सन B था जो कि क्रॉस कर रहा था एक पब्लिक रोड को, बट वो रोड बंद करी जा रखी थी बोट रेस की वजह से। तो जो दो पुलिसमैन थे वो क्या करते हैं, उनमें से एक जो होता है वो उस डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है और वो कहता है कि आप दूसरी रोड से वहां जा सकते हो, बट जो बी होता है वो वहीं पे रुक जाता है और वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता है और वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो पुलिसमैन के इस एक्शन के अगेंस्ट केस लेकर के आता है। सो यहाँ पे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? सो हियर द कोर्ट हेल्ड दैट partial obstruction and disturbance does not constitute imprisonment. A prison must therefore have a boundary, as there was still one direction which B could take. He could not be said to have been imprisoned as he was not confined and prevented from passing or leaving that place. B was at liberty to move off in another direction and no restraint or actual force was used against him. तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलता है कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस को हम इम्प्रिजनमेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बी के पास ऑप्शन था कि वो सेकेंड डायरेक्शन में मूव कर सकता था, वो अपनी कंसेंट से वहां पे स्टिक हो गया था और वहां से मूव नहीं हो रहा था। यहाँ पे उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं किया गया था या ब्लॉक नहीं करा गया था। यहाँ पे उसके पास चॉइस थी कि वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकता था, बट उसने वो नहीं किया। सो यहाँ पे he cannot make the policeman held liable for false imprisonment because there is no restraint or actual force was used against him. So I hope this case law is clear to you all. So let's move forward towards our next topic, that is defenses for false imprisonment. Various defenses can be raised against a claim of false imprisonment. Some common defenses include consent. First is consent. If the victim willingly consented to the confinement, either expressly or implicitly, the defendant can argue that the confinement was not wrongful. So first डिफेंस ये बोलता है कि अगर विक्टिम ने कंसेंट दी थी कन्फाइनमेंट के लिए, वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है और इम्प्लाइडली भी हो सकती है, तो डिफेंडेंट वहां पे आर्ग्यू कर सकता है कि वो कन्फाइनमेंट रॉन्ग नहीं है। सेकेंड defense is legal authority and privilege. If the defendant can prove they had the legal right or authority to confine the victim, such as police officer making a lawful arrest, it can serve as a defense against false imprisonment claims. So second डिफेंस ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट के पास लीगल राइट है या अथॉरिटी है किसी विक्टिम को कन्फाइन करने की, कोई पुलिस ऑफिसर है जिनके पास लॉफुल अरेस्ट का राइट है, तो विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. दिस विल एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्लेम्स. So let's move forward towards our next and the last topic of this video, that is remedies for false imprisonment. When someone successfully establishes the claim of false imprisonment, they may seek remedies to address the harm caused. Possible remedies include, so basically अगर किसी ने कोई क्लेम को सक्सेसफुली स्टेब्लिश कर लिया है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के, तो वो उसके पास क्या क्या रेमेडीज होती हैं जो वो एड्रेस कर सकता है फॉर द हार्म दैट ही सफर्ड. तो फर्स्ट is damages. The victim can be awarded compensatory damages, which may include the reimbursement of medical expenses, lost wages, or compensation for pain and suffering. Second remedy is injunctive relief. In some cases, a court may issue an injunction to prevent the defendant from repeating such acts or imposing future restraints on the victim. So पहला ये होगा कि उसको damages या compensation मिलेंगे जो कि उसने सफर करे इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, या उसकी वेजेस जो लॉस्ट हुई है, या फिर वो कंपनसेशंस जो पेन और सफरिंग उसने सफर करी है. और सेकेंड रेमेडी क्या है कि जो कोर्ट होगा वो इंजंक्शन लगा देगा टाइम भी, जिससे वो डिफेंडेंट को प्रिवेंट कर सके ताकि वो फ्यूचर में ये सेम एक्ट रिपीट ना करे और वो फ्यूचर रिस्ट्रेंट विक्टिम पे ना लगाए.
So that's all for today. Thanks for watching, and guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so whenever I will upload a new video in the series of Law of Thoughts, you will get a notification of it. And yeah guys, I already uploaded 4 to 5 shorts on my channel on which I covered all these concepts in just 60 seconds, so you can visit the playlist which I had already created on my channel with the title Law of Thoughts in 60 seconds. So you can visit those shorts also to clear your concepts within 60 seconds. So yeah, that's all. Please keep loving and keep supporting, and thanks for watching.